So this is the question number 11 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, a Python statement has been given to you and you need to identify the type of error this particular statement contains. In order to answer this one, first of all, we need to be aware what is an error in Python and what are the different type of errors we have in Python. तो बेसिकली एरर क्या हो गया आपका एक बग हो गया प्रोग्राम में जो भी कोई आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसके अंदर कोई स्टेटमेंट के अंदर आपने कुछ गलत रूल यूज कर लिया या गलत सिंटेक्स यूज कर लिया इन दैट केस द इंटरप्रेटर विल थ्रो अस एन एरर नाउ अगर मैं बात करूं पाइथन के अंदर एरर्स की तो वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ एरर फर्स्ट वन इज सिंटेक्स एरर देन वी हैव रन टाइम एरर एंड द लास्ट वन इज लॉजिकल एरर. Now syntax error क्या होते हैं basically? Just taken an example. Let's take an example for this one. Let's say I have a statement a plus b equals to c. So this will give you syntax error. Why? Because as per the rules of a Python, on the left hand side of assignment operator, we cannot have an expression. Okay, we can have only a variable on the left hand side of an assignment operator. तो इसको अगर मैं syntactically correct करना चाहूँ तो it will be the correct statement. This will be the correct statement. C equals to a plus b. However, when we run this program, it will give us error again. But this time it will not be syntax error, it will be a runtime error. Why runtime error? Why? Because आप जो वैल्यू यूज करना चाहते हो a और b की उन वैल्यूज को क्या करा आपने डिफाइन नहीं किया. तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको पहले वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा. नाउ व्हेन यू रन दिस वन, नाउ इस केस में क्या होगा आपका प्रोग्राम रन होगा और c की वैल्यू क्या कंप्यूट होगी आपकी 5 plus 4 which is 9. बट फॉर एन एग्जाम्पल आपको करना क्या था आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करना था बट आपने गलती से क्या कर दिया मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दिया प्लस कर दिया. नो दिस इज योर लॉजिकल एरर. समझ में आया ना आपको कि सिंटेक्स एरर क्या होता है रन टाइम एरर क्या होता है एंड देन लॉजिकल एरर क्या होता है. नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर द टाइप ऑफ एरर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंटेन. नाउ अगर मैं बात करूं इसकी तो सिंटैक्टिकली आपका करेक्ट है. व्हाई इट इज करेक्ट? बिकॉज जब आप क्या कर रहे हो आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है आपका एक वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पे क्या है एक एक्सप्रेशन है. However, when you run this program, it will not give you syntax error, but it will give you runtime error. Runtime error क्या है? It will give you zero division error. That means in Python or any language per se, you cannot divide any number with zero. So for this one, option number D is the correct one. If you wish, you can run this one on IDE as well. You will see कि जो आपका जब भी आप प्रोग्राम को रन करना चाहोगे, it will give you the runtime error. तो runtime error क्या है इस केस में? Zero division error. Now based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to tell in the comment box what will be the right answer for this particular question. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.